YouTube channel. So in today's video I'm going to share with you guys some cool pictures idea that I created using the Picsart app. So basically in this video I will be sharing all this cool photo editing that I did with the Picsart app, and I'm quite excited about this video because results are amazing, beautiful and cool. And already मैंने एक वीडियो करी है with the same concept which is this holy photoshoot video. So अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है then please go and watch it and hit the like button. So yeah, I'm super duper excited. Now let's get into the video. But video start करने से पहले you know the drill. You have to like, share and subscribe to my channel. And after watching this video, please comment down below the picture idea or picture editing you like the most. And also please follow me on my Instagram. And yeah, and also please hit that bell icon वाला बटन ताकि जब मेरे वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए. And yeah, that's it. Now let's get started. Now to make a cartoon effect वाला picture, first you have to take some pictures in this poses. So यहाँ पे मैंने अपना स्कर्ट वेयर किया है and मैं अपने स्कर्ट को इस टाइप से थ्रो करूँगी. So basically here we are trying to take some happy mood वाले pictures because cartoon effect में happy mood वाले pictures ज़्यादा अच्छे लगेंगे. So that's what I'm doing right here. And yeah, that's it. Now when you get the perfect shot, you have to open this picture in Picsart app and then you have to select the option effect and उसमें से आपको option select करना है artistic. Now artistic option में जो फर्स्ट फिल्टर है ऑयल पेंटिंग का वो आपको आपके पिक्चर पे अप्लाई करना है. एंड अप्लाई करने के बाद यू विल सी कि जो फिल्टर है उसने आपके फेस को अजीब कर दिया है. बट डोंट वरी बिकॉज वहाँ पे हमें ये फिल्टर नहीं चाहिए बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम अपने कपड़ों को कार्टून इफेक्ट दे रहे हैं. सो ऊपर आपको एक रेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके थ्रू आप ये वाले इफेक्ट आपके बॉडी पार्ट से रिमूव कर सकते हैं. एंड ये वाला इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपको आपके जो भी क्लोथिंग आइटम है उस पर ही अप्लाई करना है. Now I will click on the option apply and जब ये filter apply हो जाएगा then I will repeat the same process again because मुझे वो cartoon effect और ज़्यादा चाहिए. So that's why I will repeat all the process again. Now to make this picture more interesting I will select the option sticker and sticker में मैं search करूँगी stars. So I'm selecting this sticker because इसमें already cartoon वाला effect है तो ये picture के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा. And now I will apply this sticker as a background of my picture. Now to make a perfect background of this sticker I will use the eraser option and I will erase all the part जो भी picture के ऊपर आएंगे like this. And yeah, that's it. Now the last step to make this a perfect picture I will again select the option effect and उसमें से I will select the option FX and then I will apply the filter HDR on this picture and you will see a total difference. Now again we want this filter only at the clothing part, so using the eraser option again I will erase the filter from my body parts. And yeah, this is the final picture. Now to get a cool picture like this, again you have to take some pictures in two different poses. So for the first pose you have to hold this गुलदस्ता like this and आपको pretend करना है कि जो एक वो फूल है वो गिरने वाला है. And yeah, that's it. That will be our first pose. And for the second pose आपको ये फूल इस टाइप से पकड़ना है. So basically यहाँ पे मेन फोकस इस फूल में है बिकॉज इसको हम बाद में क्रॉप करने वाले हैं. So आपको इस टाइप से पकड़ना है कि ये आपके गुलदस्ते से नीचे गिरा है. So yeah, that will be our second pose. Now when you get the perfect shot then open the first picture in the Picsart app and then select the option add photo and यहाँ पे आपको दूसरा वाला फोटो ऐड करना है. Then select the option cutout and then select the option outline and यहाँ पे आपको ये जो फ्लावर है इस पे आउटलाइन करनी है. So basically इसको हम यहाँ से क्रॉप करने वाले हैं. नाउ यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से आउटलाइन करनी है ताकि सिर्फ और सिर्फ वही फ्लावर ही क्रॉप हो. इन केस अगर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है देन यू कैन यूज़ द इरेजर ऑप्शन एंड यू कैन रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा पार्ट. नाउ एज यू कैन सी वाला जो फूल है वो मैंने अपने हाथ से पकड़ा था एंड जो मेरा फिंगर है वो स्टैम्प के ऊपर दिख रहा है. नाउ अगर मैं यहाँ पे इरेजर ऑप्शन यूज़ करूँगी तो वो पूरा पार्ट ही उड़ जाएगा. सो फॉर दैट यू हैव टू यूज़ द ऑप्शन blemishes. Now to get the blemishes option you have to select the option beautify and then select the option blemishes. Now blemishes option के थ्रू जो फिंगर स्टैम्प के ऊपर दिख रही है वो आप easily रिमूव कर सकते हो. Now जब वो फ्लावर का पार्ट परफेक्टली क्रॉप हो जाएगा then you have to place that flower in the perfect place जहाँ पे ऐसा लगे कि वो फ्लावर गुलदस्ते से ही नीचे गिरा है.
Now here you have to change the ratio of the picture into 16:9 and then you have to select the option sticker and यहाँ पे आपको search करना है newspaper fire. So here we are using the newspaper वाला sticker but I have already shared one video जहाँ पे मैंने real newspaper के साथ कुछ pictures ideas share करे हैं. So if you are interested to watch that video then I will share the video link in the I button, so please go and watch it. Now in newspaper fire sticker you have to select the first sticker and you have to place it on your picture like this. Now sticker perfectly placed करने के बाद you can again crop this picture in the square shape and yeah, that's it. This is the final picture. Now to get this cool double exposure wala picture, again you have to click some pictures in two different poses. So for the first pose you have to keep your face straight and yeah, that will be our first pose. And for the second pose you have to be very happy, like you know, you have to take some fun pictures and yeah, that will be our second pose. Now open your first picture in Picsart app and then select the option effect and then scroll and select the option colors and यहाँ पे जो रेड कलर का फिल्टर वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है एंड वाला फिल्टर आपको आपकी पिक्चर पे अप्लाई करना है. Now to get the red color आपको ह्यू का ऑप्शन पूरा डिक्रीज कर देना है and you will get the red color. Now open the second picture in the Picsart app and again select the option effect and then scroll and select the option colors and use the same filter. Now आप जब same filter apply करेंगे तो आपका picture blue color में बदल जाएगा and yeah, that's it. Now save the picture. Now again open the first filter जिसको हमने रेड कलर में टर्न करा है and then select the option draw. ऐड फोटो करके एक ऑप्शन मिलेगा, उससे आपको सेकंड वाला पिक्चर आपके पिक्चर के ऊपर ऐड करना है. ना जो सेकंड पिक्चर आपने ऐड किया है उसको आपको परफेक्टली एडजस्ट करना है. नाउ क्लिक ऑन दिस बॉक्सेस वाला ऑप्शन एंड उसमें से आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे. यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन screen and this is what will happen and again you have to adjust the second photo like this and उसको आपको स्टेप से साइड पे रखना है. Now you have to crop the picture like this. Now to make this picture more interesting you can use the filter HDR and it will change your picture completely and this is how the final picture looks. That's all for today's video and I really hope आपको ये वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी हो and इनमें से कुछ भी लगा हो then don't forget to share this video with your friends and family, like this video and subscribe to my channel and also please follow me on my Instagram and yeah, that's it. Thank you for watching my video. I will see you in the next video. Bye. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.